Please tell me. Right? Tell me. देखिए, whatever value of x you put, what will be the maximum value of this? 0 से ज्यादा वैल्यूज तो नहीं आ सकती थी ना. Odd minus mod of x. Mod x will always be positive. Whatever value you take, it will be always positive. When positive multiplied by negative, it will be negative. The minimum value for this can be 0. Sorry, maximum value can be 0. So therefore, it is minus infinity to 0. This is clear. Now we see what is the rule to find out the range of a function. Right? I'll tell you the steps to find out the range of a function, and then I'll take an example to show you. Right? Now, what are the steps? Step 1. Let y equal to fx. Explain that every step with some function, that will be fine. Right, students? So I'll take the function also. Let's say we have this function. Look at the question number 24 in your assignment. Question number 24 in your assignment. Right? The first step is to the y equal to f. Right, students? Question number 24. The range of the function. Now, students, the very first step to find out the range of the function, prior to taking y equal to fx, you have to find the domain. So, what will be the domain of this function? What will be the domain of this function? First of all, you have to find the domain of the function before finding the range of the function. What will be the domain of this? Apply the first rule of the steps. Right, students? This is the first step. Now, from here we get root 2 minus x, root 2 plus x not equal to 0. Therefore, x is not equal to minus root 2 and plus 2. So this is the value of x cannot be. What will be its domain? What will be its domain? Clear, students? Is this the domain of this function? Yes or no? Yes. Now, see what are the steps. First step is let y is equal to fx. Now, what it function becomes? Is this clear? This is the first step. Now, what is the second step? Convert function in terms of gy. Right? What is the meaning of this? Our function was y is equal to 3 over 2 minus x squared. Now we have to convert this function into the form of gy. How to do this? This can be written as this. Is it clear, students? Now 2 minus 3 by y is equal to x squared. So therefore x will be equal to, this is the function that is gy, right? Have you understood this now? Is this step clear? Is this step clear or not, bacho? Now we have to find out the range of the function. Now how to find out the range?
जैसे आप डोमेन के लिए फाइंड आउट करते थे ना बेटा, सेम कंडीशन यू हैव टू अप्लाई फॉर एयर. नाउ व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x? व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ x हियर? मींस is it clear? Is it clear or not? The function in a square root should be greater than 0, right? Or it can be equal also, right? So now what we'll do, we'll solve this. This becomes, is this clear बच्चों? यहाँ तक कोई doubt? Is this clear? Is it clear or not? Yes. Now we have two cases here. We have y minus, what was it? Y minus it should be greater than 0. So now means this entire thing should be greater than 0. How it can be greater than 0? If numerator and denominator both are positive or either both are negative. Yes or no? Yes. Okay, so first case, both are positive. What will be the case here? And right? So from here, what you got? Y is greater than 3/2. And here, is this clear, students? What will be the intersection of this result? Please tell me. What will be the intersection of, means the function should satisfy both these conditions. So now tell me what will be the intersection. अच्छा बिल्कुल सिंपल है, देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया भी था. ये हमारा इंटरवल हो गया थी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. नो दिस इज 3/2, राइट? नाउ फर्स्ट फंक्शन इज greater than 3/2, right? Second function is greater than 0. What will be the intersection of these two? 0. Yes or no? So from here, y is greater than 3/2. So one result is this. Is it okay or not? Yes. Anything not clear? बच्चे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा इनिशियली, बट क्वेश्चन अगर सच कि आपको तभी क्लियर होंगे इफ वी टेक सम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, राइट? नेक्स्ट इज, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों? टू मेक दिस ग्रेटर देन 0, बोथ शुड बी लेस देन 0. अगर दोनों नेगेटिव हो जाए देन आल्सो वी कैन गेट द सेम रिजल्ट. But a negative which will be cancelled out, then the end result will be positive. So both can be negative. Now you have to solve these two inequalities. Solve these two inequalities and tell me what will be the result. Please solve these two inequalities, students. देखिए बच्चों, ये वाला रिजल्ट तो सिंपल है. y इज लेस देन 0. यहां से क्या आ जाएगा? y इज लेस देन 3/2. तो रिजल्ट्स का इंटरसेक्शन लेना है बच्चों. दिस इज 0, दिस इज 3/2. Less than 3/2. Less than 0. What will be the intersection? What will be the intersection of these two results? So say lesser. So what the result you got from here? We have two results. अगर आप इसका इंटरवल लेंगे तो what it becomes? Minus infinity to 0 union
सबके पास ऐसा रिजल्ट जी ऑप्शन में, ऑप्शन है बच्चों ये, सी ऑप्शन, राइट? So less than 0 and greater than 3 by 2. So when you combine this, this will be the answer, right? Either the value of y, that is the range, either the range should be less than 0 or greater than 3 by 2. That will be the result of this. Have you understood, students? स्टूडेंट को कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। आई नो कि 100% सबको नहीं समझ आया होगा ये, राइट? बिकॉज इट्स नॉट कि आपको एक बार में समझ आए, विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट? We'll take the simple question also, we'll take the difficult question also, right students? So now आपकी जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चंस टू क्वेश्चन नंबर 21 and 23. Let me do these questions. These are very simple questions, students. Here no apply any results here. This is your first question. X plus 2 upon mod of x plus 2. When you have this function in chapter 2, have you done the graphs? जो आपकी एनसीईआरटी बुक में ग्राफ गिवन है, there is a function called signum function. Can anybody tell me that function? What is signum function? Anyone please tell me. बच्चे what is signum function? This is the function, right? X upon mod x. When you simplify this function, what is the result we have? This will be the result. How this result comes? If the value of x is less than 0, means x is negative. Suppose the value of x is minus 5. In the numerator it will be negative 5. What will become in the denominator? Positive 5. Mod of minus 5, that will become positive 5. Yes or no? So what will be the answer? Minus 1. When the value of x is positive, whatever it is positive, right? So in the numerator it will be positive, denominator also positive, same value, both will be cancelled out, hence the result will be positive 1, right? If x is greater than equal to 0, it will be always positive 1. Is it clear? अगर आपको याद हो इसका ग्राफ, take the graph of this function. What was the graph? It was like this. Do you remember? अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करना बेटा, you will find this graph. Okay or not? Now, let me present the result for this question. Now, that is the range of the question 21. Both the things are same. Just student, whatever will be the value of x, what will be the answer of the function? That will be minus 1 and 1. This will be the range of this function. Can anyone tell me why we have not find out the domain in this function? Why we have not find out the domain? Because the first step of finding the range was first find the domain. Why we have not find out the domain in this function? Because all the three conditions of domain, right? What were the three conditions? Here there is no need to find out the domain because this thing should not be 0, right? Means when this thing won't be 0, there will not be any results, right? So
Denominator will be 0, numerator will also be 0. Hence, the end result will be 0. So the result will be -1 and 1. His range will be -1 and 1. Is it okay? नहीं समझ आया जी? बेटा बुक में जाके ये वाला फंक्शन स्टडी करना जरा एक बार ना, सिग्नल फंक्शन. देखिए जब x upon mod x, this function can also be like this. If it is mod x upon x, then also the result is same. And also it will be -1 and 1. -1 for all the values of x less than 0. 1 for all the values of x greater than 0. Is it clear? Anything not clear, bachcho? Next question, students. Question number 23. Yes, student, the question number 23 is find the range of the function. Fx is equal to 1 minus mod of x minus 2. Yes, student. How to find out the range of this function? Can anyone explain me? Student, what will be the minimum value of this function? What is the minimum value of this function? What is the minimum value of mod x minus 2? Can it go less than 0? It will be always, see, कैसे solve करते हैं बच्चों? It will always be greater than 0? Yes or no? Yes. Its value will lie between 0 to infinity. Yes or no? Now, what is the function? 1 minus mod x. If you take negative of this, what will work out? When you multiply linear inequations, when you multiply any inequality by a negative number, what is the rule? The sign of inequality changes. Now what it becomes? Right? Clear? थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखते हैं. If it is negative, what is the meaning this? This will be less than 0 and greater than. Now it is fine. Yes. Yes or no? Lie between this. Any doubt, students? Any doubt? Inequality. देखिए बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है. इसके आप अगर साइन चेंज कर रहे हो, क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है जी. तो कितना रहेगा बेटा? तो मींस दिस विल बी लेस देन 0 बट ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी, राइट? अगर दोनों तरफ आप 1 ऐड कर देते हैं, सपोज यू ऐड 1 बोथ साइड, व्हाट इट बिकम्स? दोनों तरफ आपने 1 ऐड कर दिया. सो नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? If you add anything to minus infinity, that will be minus infinity. Means this result will be, its maximum value can be 1. So इसमें जो आपको रेंज आ जाएगी, that will be. Is this clear or not जी? ये समझ में आया स्टूडेंट कॉन्सेप्ट? चलो मैं दूसरे तरीके से कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की. देखते हैं. X minus 2 is always greater than 0. Is always greater than 0. Yes or no? If it is greater than 0, means इसकी जो वैल्यू होगी 0 या उससे ग्रेटर होगी. Here 0. What is the end result? If you put greater values, what will be the result? So this value is going down or not? Yes or no? Now it is better. थोड़ा इजी आउट हुआ है. तो वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू इज 1.
It cannot go beyond 1. Right or not जी? इसका अगर आप ग्राफ, आपको मॉड फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने आते हैं बच्चों? Can you draw the graph of this function? Find out the range by the graph also. See, देखिए बच्चों ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। आप जूनियर क्लासेस में एक टेबल बना के ग्राफ ड्रॉ करते थे ये वाला। Here also you have to draw in the same way, right? If you put the value of x as 2, what will be the answer? If you put the value of x as 3, what will be the answer? Let's say you put the value of x as -1. What will be the answer? 3. What is the answer? बच्चे आपने यहाँ पे -1 पुट किया, -1, -2, -3. So 1 minus 3 will be, if you put x as 0, value will be clear. Let's say we put x as 3, value will be 3 already put कर दिया हमने, 1 put कर लेते हैं। When you put x as 1, answer will be, what will be the answer? What will be the answer when you put x as 1? तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ आएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ y will be maximum at 3. This graph will go like this. This 1 is the maximum value, right? At which point it will go like this. Is this clear, bachcho? So the maximum value what y can attain is 1. Minimum value can go anything down, means it can go up to -infinity, but the upper limit is 1. Is it okay? Find it out. Right, students. So this exercise we have done. Now I'll explain 1-2 more questions to you. Okay, students, let this question. Fx is equal to 9 minus x square. This is the question from your NCERT book. 9 minus x square. Can you find out the domain of this? What will be the domain, students? Please find out. Last time किया था ये वाला. Last time same question किया था बच्चों हमने. See how to find out its domain. It will be greater than equal to 0. So now 3 minus x is plus x. जल्दी से इनइक्वालिटी बच्चों सॉल्व करके बताइए कि क्या आएगी इसकी डोमेन। मैंने आपको इक्वेशन फॉर्म कर दी है जी। रिप्लाई करो बेटा। आपको I have explained this method. Take this point -3, 3. Domain of this function. First find out the domain. Then you have to find out the range.
मेरे को जो it seems to be it becomes -3 to 3. ये वाला इंटरवल आ जाएगा बच्चों? Yes or no? Right? So जो आपके पास डोमेन आ गई -3 to 3. Now you have to find the range. How to find out? If you put any number in this in place of x, but it becomes minimum, it will be 0. -3 to 3. If you put any value here in place of x, what it becomes? X square can be minimum 0. Yes or no? Or maximum what can be 0? What will be the maximum value of x square? 9. Can it go above 9 or not? X square will lie between 9 and, yes or no? This is the value of x. ये वाला part. इसमें आप किसी भी नंबर का जीरो स्क्वायर करेंगे, it cannot go beyond 9 and cannot go less than 0. Yes or no? Because square of anything is always positive. So if you put it 0, so answer will be 3. If you put 9, it will be 0. So the domain will be, range will be 0 to 3. Right? Is this clear? This range will be 0 to 3. Any doubt, students? No? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जी. Now the question is, let if fx over 1. This is the question, students. Find out the range of the function. Now first of all, tell me what will be the domain of the function. The domain of the function. What will be the domain of the function? बेटा डोमेन तो बड़ी सिंपल सी है. देखिए ना, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. It will never be 0 because x square will be always positive. Right? So it cannot achieve the value -1. So means it will always positive. तो domain इसकी आ जाएगी बेटा. X belongs to all real numbers. So now you have to find out the range. See how to find out its range, beta. It's a different question. Just have a look carefully. Right? Let y is equal to fx. So what the function become? Now convert this function into y form. So what it becomes? When you cross multiply this. Is this clear, students? Any doubt in this, students? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जी. Can you convert this into y? Can you convert this function into y now? Yes, students. Can you do it or not? Now what this becomes? Right? So now this is a quadratic equation in x. So when you find the solution as x by the quadratic formula, what it becomes? Minus into -1 plus minus square minus. Is this clear, बच्चों? Is it clear or not? Any doubt in this? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए जी.
Any doubt? Please tell me then. Now you have this inequality. Solve this. What is the inequality you have? Means this thing should not be. Is this clear? Is it clear or not, Ji? Beta, you have to solve. Now you have converted this function into the form of y. X की वैल्यू क्या आ रही बच्चों? 1 plus minus 1 minus 4y square upon 2y. Now this thing should not be. This thing should be greater than equal to 0. Right? Is this clear? So you solve this inequality. 1 minus 2y into solve this inequality बच्चों. What your result is? Solve this inequality. इतनी देर क्यों लगा रहे हो? इसको सॉल्व कर लो. सिंपल सा है जी. यहाँ से 1 minus 2 2y should be greater than equal greater than 0. Solve this inequality जी. तो यहाँ से दो वैल्यूज आ जाती हैं आपके पास y की and plus 1 by 2. Take any number in between these three intervals. आपके पास आ गया तो minus infinity to minus 1 by 2, 1 minus 1 by 2 to 1 by 2 and 1 by 2 to infinity. तीन intervals आ गए जी. Yes. Suppose you put any value from this interval. Let's say I put minus 1 in this. If you put minus 1, minus, अगर minus 1 put कर रहे हैं बच्चों, so what this becomes? Does it satisfy the inequality? We need this function should be greater than equal to 0. ये पॉजिटिव आ गया बच्चों और ये माइनस. सो इनइक्वालिटी सॉल्व हो रही है जी यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है साइन. चेक इन दिस इंटरवल. बच्चे ये स्टेप सबको समझ आ रहा है? हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है. y की कितनी वैल्यू आ गई? कैसे फाइंड आउट की? 1 minus 2y इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ गया minus 2y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 1 by 2. सिमिलरली दूसरी वैल्यू आ गई y इक्वल टू -1 by 2. So now your interval from minus infinity to infinity is divided in three interval: minus infinity to -1, minus 1 by 2, minus 1 by 2 to 1 by 2 and 1 by 2 to infinity. Now अब फंक्शन की वैल्यू इनइक्वालिटी चेक करेंगे हम किस इंटरवल में सेटिस्फाई कर रही है. ये इक्वालिटी है. हमने यहां से एक पॉइंट लिया. कौन सा पॉइंट लिया? -1, which does not satisfy this inequality. So therefore ये वाला इंटरवल तो नहीं होगा जी. Now take the point in this interval. What point take in this interval? Let's say 0. If you put 0, 1 minus 0 that is 1, 1 plus 0 that is 1. तो पॉजिटिव पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव है बच्चों. तो ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है इनइक्वालिटी को जी. Yes or no? Now move to the third interval. Let's say you take value 1. When you take 1, this become negative. When you take this negative, this positive. So the product is negative. So ये वाला इंटरवल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? प्लीज टेल. So now what will be our range? ये जो इंटरवल आ गया हमारे पास रेंज आ गई. What will be the range? Is this clear? Is this clear or not जी? तो बेटा रिप्लाई करेगा प्लीज.
Bache, I understand this is a bit complicated topic. It will take time for you to absorb this. The only thing is you should note down and you must practice at least 20-30 questions on this to get familiar with the topic. You need to know how to solve the inequalities, right? So there are so many things involved. Okay, and it has so many methods. I'll tell you one more method to find out the range. Right, students? So इसको note कर लो please. Note this and you should revise yourself. Still कोई doubt है बेटा? Please ask the questions. Yes or no? चलिए एक next एक और टाइप पे चलते हैं बच्चों. I'll tell you how to find out the range. Let's say we have this question. Let's say we have this inequality. Right? We have this inequality. Is it a quadratic equation? Yes. How to find out its range? How to find out its range? See, students, in class 10th, you have drawn the graph of the quadratic functions. What was the shape of the graph? What is the shape of the graph? किसी स्टूडेंट ने बोला है मुझे. हाँ जी, कौन है प्लीज? पैराबोला. पैराबोला किसने बोला था? गर्ल की आवाज आई थी मुझे. आई थिंक शी इज लाउड. यस. Is it a parabola? Yes. Now please sit down. Very good, beta. Now every quadratic equation represents a parabola. Whenever you have to find the range of a function in the form of a quadratic equation, how to do this? Understand 2-3 things. Students, when you used to find out the solution of a quadratic equation, we have 3 cases बच्चों. तो ये वाला केस होता था, एक this case और तीसरा this case. Do you remember all these 3 cases? Yes or no? If you have this case, तो ग्राफ किस तरह से बनता है बच्चों? देखिए जरा ध्यान से. It will cut only at, let's say, 1 point. इस point पे कट कर रहा है बेटा. This will be cutting at 2 points. Yes. And in this case, when d is less than 0, जब d less than 0 होता तो what we used to say कि no solution or imaginary solution. The roots are imaginary. What is the meaning of imaginary? What is the meaning of roots? Means these points. Right? Now, when I say roots are imaginary, that means this line, this parabola does not cut at any point on the x-axis. Is this clear? Now, if you have to find the range of this, right? आपको अगर ग्राफ बनाना आता है बच्चों, तो range can you find out? What will be the range of this function? If you know this point, if you know the coordinate of, let's say, this point, can you find out the range? What this graph shows कि जो y की जो minimum value है, that is y naught. y की जो minimum value है y naught है, but उससे ऊपर ही जा रही है वैल्यू. तो इस केस में रेंज क्या आ जाएगी बच्चों आपके पास? What will be the range? Y naught to infinity. Yes or no? Y minimum value. Are you getting it or not? क्या होती है y coordinate? Range is the y coordinate ना? So minimum value is there y naught. In this case, if you know this coordinate of this point, let's say x, इस केस में भी आपके पास क्या आ रही है रेंज? y naught to. Similarly here, if you know this point, is this clear?
रेंज यहाँ पे भी आ जाएगी y0 to infinity. Right? Now, my question is, this graph is opening upward parabola. Can this be like this also? ग्राफ नीचे भी ओपन हो सकते हैं ना बच्चों? Right or not? Now, how will come to know whether the function is opening downward or upward? उसके लिए एक रूल होता है, देखिए नोट कीजिए. क्या इक्वेशन बच्चों? If a is greater than 0, if a is greater than 0, मतलब अगर आपके पास x square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ऑलवेज ओपन अपवर्ड, राइट? If a is greater than 0, then parabola is upward opening. If a is less than 0, parabola is downward opening. Is this clear, students? मतलब upward opening like this, downward opening like this. इसका एक और नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं वैली. This is the shape of valley and this is the shape of hill, right? Is it clear? देखिए अभी आपको रिजल्ट जब आप देखोगे ना तो यू विल बी सरप्राइज कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द रेंज. नेक्स्ट थिंग इज, जो बच्चों ये ग्राफ होता है ना, इसका जो ये पॉइंट होता है नोन एज वर्टेक्स. क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. और ये जो पॉइंट होता है ना बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए फार्मूला होता है, वो याद रखना है आपने. -b/2a minus d/4a, right? -b/2a minus d/4a. फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चों? x² minus 3x plus 4. What is a here? What is a here? What is b? C? है, C है, ये D नहीं है. D आप लोग फाइंड आउट करोगे. D फाइंड आउट कर सकते हो? क्या फाइंड आउट करना बेटा? डिस्क्रिमिनेंट. कैन यू फाइंड आउट D? Please tell me what is the value of D. जी क्या वैल्यू आ रही है D की? -7. Now tell me what is the coordinate of the vertex? ये आ जाएंगे बच्चों कोऑर्डिनेट्स 3/2, 7/4. Yes or no? So now tell me what will be the range of this function? What will be the range? Now graph is like this. इसका जो lowest point आ रहा है, lowest point is 7/4. मतलब y की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है 7/4 and it is going upward. So the range of, 7/4 into 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 7
राइट बच्चों, तो रेंज क्या आ गई आपके पास 7/4 कॉमा इंफिनिटी। इज क्लियर? एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? ये सिंपल हो गया। अगर हम क्वेश्चन को अपने स्टैंडर्ड मेथड से करते हैं रेंज फाइंड आउट करना, आई टेल यू दैट आल्सो। क्वेश्चन क्या था बच्चों? अच्छा, एक चीज मैं और बता देता हूं। इफ द शेप ऑफ द ग्राफ इज दिस, अगर ग्राफ की शेप ये है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट तो सेम होंगे बच्चों, बट यहाँ पे रेंज क्या होगी, ये हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा। रेंज क्या होगी माइनस इंफिनिटी टू, दिस विल बी द रेंज। क्लियर? इफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ए इज नेगेटिव, then this will be the upper range. Got it? Is this clear बच्चों? Now if you have to do it by the standard way, if you have to find out its range, how to do that? What will be the first step? Right? So the y will be equal to, right बच्चों? So what we'll do, first we'll make it a perfect square. How to make the perfect square? Y is equal to x square minus 2 into x. फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है। दिस इज योर ए माइनस 2a, व्हाट विल बी बी। ये वाली टर्म को आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली थिंग इज इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कैन आई राइट इज एज 3/2? कैन आई राइट 2 multiplied by x multiplied by 3/2, it comes out to minus 3x only ना? Yes or no? Whatever is your b, add its square as well as subtract its square. जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो वो नलीफाई हो गए, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो गए ना बच्चों। एंड रिजल्ट तो सेम ही आया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जी। इसको जब सॉल्व किया आपने तो क्या बन गया बच्चों, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 होल स्क्वायर। यहां तक जो है ये फार्मूला पार्ट बन गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 4 माइनस 9/4। कितना बन जाएगा बच्चों? 4 माइनस 9/4, बताओ जरा जल्दी से। 7/4 आ गया, राइट? यही आ रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट जी? ठीक है, नाउ वी कन्वर्ट दिस इनटू द फंक्शन y minus 7/4 इक्वल टू x minus 3/2 होल स्क्वायर, और x minus 3/2 will be equal to under root of y minus 7/4. The value of x बच्चों 3/2 plus, is this clear? ये आ गई वैल्यू जी? यहां तक कोई डाउट बच्चों? नाउ अब आ जाओ अपने रूल पे। व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ y here? y should be means anything into the square root part should be, means y minus 7/4 should be greater than equal to 0. So y is greater than equal to 7/4. सेम रिजल्ट आ रहा है बेटा दोनों जगह से? यस और नो? कौन सा मेथड ठीक है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? जो भी अच्छा लगे आप कर लेना बेटा, राइट? सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द शॉर्टकट आल्सो। द फर्स्ट वन इज अ शॉर्टकट। आप लोगों ने पहली बार किया ना तो आपको लग रहा है बहुत सारी चीजें हैं,
बच्चे एक बार देखते हैं उसको कि ए स्क्वायर का ए का साइन क्या है, तो किस शेप में बनेगा, और सीधा स्ट्रेट अवे वाई को डाल देते हैं। राइट, एनीथिंग नॉट क्लियर बच्चों? नो सर, नो सर का मतलब क्या क्लियर नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन है, उसकी रेंज बता दी, सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ आपको। फाइंड इट्स रेंज, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हाँ जी बच्चों, पहले सबसे पहले तो बताइए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट विल बी द डोमेन? तो बड़ी सिंपल सी चीज थी, डोमेन तो निकालना है इसकी, एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखिए आपको दो रूल्स थे बेटा डोमेन फाइंड आउट करने के लिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो एंड द फंक्शन इन द स्क्वायर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। टेल मी, रेज योर हैंड्स, अदरवाइज मैं पूछ लेता हूँ आप लोगों से किस किस ने किया। पंडित आशीष पाल सिंह सिद्धू, प्लीज कम बेटा। Aquí बेटा काम होगा। 5, infinity। हाँ जी, 5, infinity। 5 कॉमा infinity। इन्फिनिटी कैसे फाइंड आउट किया बेटा आपने? हाँ जी बताइए जरा, कैसे फाइंड आउट किया? आंसर तो बड़े सारे वेज होते हैं आंसर पता करने के। माय ऑब्जेक्टिव इज यू शुड लर्न हाउ टू डू दिस योरसेल्फ। एग्जाम में कोई नहीं आएगा आपको बताने, किसी से नहीं आप देख पाओगे। प्लीज सिट डाउन। हाँ जी, हरजत सिंह खोकर, हरजत प्लीज कम बेटा। हैव यू डन? Yes। हाँ जी बताइए बेटा। सर -5, infinity। -5 कॉमा 5, -5 या +5? +5। +5 कैसे आया बेटा ये? So by taking sir x is equal to fy। रिपीट करना, क्या बोला बेटा आपने? By taking sir f is equal to f bracket y। नहीं नहीं, प्लीज सिट डाउन। बेटा देखिए कैसे होगा ये, फाइंड आउट करने के लिए मैंने 3 रूल बताए थे कि आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक तो ये वाली जो चीज है ये जीरो नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज की थी, जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए।
अब आपने दोनों रिजल्ट्स को जब कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 और ये क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। तो आप लोगों का आंसर तो सही है पर जस्टिफिकेशन सही नहीं थी कि इसकी डोमेन 5 कॉमा इंफिनिटी क्यों आ रही है। 5 इंक्लूडेड होगा जी, ये एक्सक्लूडेड होगा, सॉरी ये एक्सक्लूडेड होगा जी। एक्सक्लूडेड क्यों होगा बच्चों, अगर ये इक्वल टू होता है तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, देन फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, so therefore it will be 5 comma infinity. Now how to find out its range, y is equal to 1 over, फंक्शन को सॉरी y बना लिया हमने ऑलरेडी, फंक्शन को हम y की फॉर्म में ऑलरेडी ले चुके हैं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 by y squaring both sides, it become 1 over y square। सो फंक्शन को हमने कन्वर्ट कर दिया बच्चों, राइट। नाउ you have to find out the, what you have to find out, range, what could be the value of y, yes sir, क्या होगी यहाँ पे रेंज इसकी, बताइए जरा जी, what could be the range of the function, just tell me students। यस, ये आज आपका होमवर्क का काम है। सर कैन यू हियर मी, हाँ जी सर, हाँ जी सर shall we send an assignment of 10-15 questions combined of domain and range so that you ठीक can, क्योंकि बिकॉज आपको पता ही है सर टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को शुरू में राइट, इट्स ओके, यस सर, राइट सर, सो आई विल सेंड एन असाइनमेंट of 10-12 questions so that they can do it, sir. Thank you, Sure. students. Thank you for joining. Thank you, Lord, sir. थैंक यू सर।